Hey Nikhil, am I audible to you? Hi, Prince. Yes, I can hear you clearly. Great. Welcome to the forum, Nikhil. Lovely to have you today. So, Thanks so Sandeep, much. I can see you as well. I would appreciate if you join us as a speaker. And without further ado, let me take the opportunity to introduce our guest for today. So today we have got Nikhil Rungta with us. So those who know must be aware of his profile, but some of us are joining for the first time. So Nikhil is a seasoned corporate leader with over 25 plus years of experience, and he has been in various CXO roles across consumer internet, e-commerce, SaaS companies, and CPG. He has got very rich experience in general management strategy, growth, sales, branding, performance, and social media marketing at global companies. And he has also helped companies set up the starters of the like of Google, Intuit, Yahoo, Reliance Jio, Housing.com, Yatra.com, and many more. So he has got expertise in building brands, growing businesses, and leading high performance teams. So today we are discussing infinite game mindset, be it in investing or in life or maybe across developing a business. Very warm welcome, Nikhil. So just in case I missed anything on your introduction, I would request you to suffice that and opening note request on the topic which we would be discussing today. No, thanks so much. I think, Prince, thank you so much for such a warm welcome. And I think, you also covered some of the things that I've done. I would just like to say that I think when I look back 25 years of my working life, uh, you know, 25 साल पहले, and Prince, can I mix Hindi and English just to be sure? That would be more better. ओके ग्रेट. हाँ, तो फिर वो मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा जिससे कि हम सब तक पहुंच सके. तो 25 साल पहले आई थिंक अगर कोई मुझे बोलता कि ऐसी एक करियर आपकी जर्नी जाएगी तो बड़ा मुश्किल था ये कह पाना. बट आई थिंक विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, mentors, I think it's been a very interesting journey. I've got an opportunity to work across very small companies, startups, and also very large Indian companies and multinationals across the world. So I think usually I like to describe my corporate journey or my working journey as a more like a jungle gym rather than a linear path that I have taken. So yeah, and I think, anyways, you've spoken about some of the things that I've done, some of the companies that I've worked for, and I think today, I thought let me share one of the things, one of the thinking that I have over the years, having worked across so many companies, and uh, you know, a great way I thought to summarize that will be the infinite uh, game mindset. So this idea of infinite game mindset came from a book which a famous author, Simon Sinek, he has a book by the same name called The Infinite Mindset. And I would say anybody who's on this podcast today with us and loves to read must check this book out. It is very interesting. I read it a few years back and it had a lot of impact on me and how I think about things. तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, फॉर मेनी ऑफ यू फॉर हुम दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थिंग दैट यू हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट डज इट इवन मीन? ये इन्फिनाइट गेम माइंडसेट होता क्या है? तो ये इन्फिनाइट गेम माइंडसेट बेसिकली कम्स फ्रॉम गेम थ्योरी, जो कुछ लोगों ने, आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे जब भी पढ़ी होगी, तो उसमें दो तरह के गेम होते हैं, फाइनाइट गेम्स एंड इनफाइनाइट गेम्स. Finite games are essentially where, in fact, because India won the World Cup yesterday and cricket is fresh in our minds, so cricket is a finite game, where players are known, rules are fixed, कि अगर बॉल वाइड जाएगी तो आपको एक रन मिलेगा, या जो टीम जीत जाएगी, जो ज्यादा रन बनाएगी वो टीम जीत जाएगी. अग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके,
एंड ऑलवेज देयर इज अ विनर एंड अ लूजर। पर ये इनफाइनाइट गेम क्या होता है? इनफाइनाइट गेम ऐसा होता है जिसमें कुछ नोन प्लेयर्स तो होते हैं बट अननोन प्लेयर्स भी होते हैं, और नए नए प्लेयर गेम में ज्वाइन करते रहते हैं। दूसरा, इसमें रूल्स चेंजेबल हैं, कोई कैसे भी खेल सकता है, और ऑब्जेक्टिव इज टू बी इन द गेम एंड कीप द गेम गोइंग ऑन। सो यू प्ले टू प्ले, नॉट टू प्ले टू विन। सो मुझे लगता है कि हम, चाहे हमारी लाइफ हो, हमारा बिजनेस हो या मार्केट्स हो, ये सब एक इनफाइनाइट गेम की तरह है। तो अगर हम उसको उस तरह से देखेंगे तो इट जस्ट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट इज हाउ दिस केम टू माय माइंड। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको, हमने जब ये टॉपिक की भी हम बात कर रहे थे, तो आई डिसाइडेड टू कॉल इट द इनफाइनाइट गेम माइंडसेट। अब इसको ब्रेक करते, इन्फानाइट, गेम और माइंडसेट, तीन वर्ड्स में। इन्फानाइट क्योंकि ये चलते रहना चाहिए, यू प्ले टू प्ले। गेम क्योंकि अगर हम इसको गेम ना सोच के जॉब सोचते, गेम ना सोच के और कुछ सोचते, तो फिर ये, जब हम गेम खेलते हैं तो हम रिलैक्स्ड होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं। तो चाहे वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, मार्केट्स में कर रहे हो, तो वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट क्यों? बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ वे ऑफ बिहेविंग, दिस इज नॉट, ये कोई सिद्धांत या नियम नहीं है, ये कोई एक्सियम नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इसलिए इन्फानाइट गेम माइंडसेट। सो इसेंशली ये एक प्रिंस in a nutshell was what I thought could be an interesting topic for us, and how it has really helped me in my journey of my working life, and also when I think about markets. So, Nikhil, like throughout our lives, be it knowingly or unknowingly, we apply these principles. But would appreciate if you share some examples wherein, in your corporate life, you had applied the principles of infinite games and how it has fared in the sense like helped you grow in those aspects. Sure. Uh, so while we do that, I think Sandeep ji is also on the line. So if we can take him on as the speaker as well, because it will be interesting to guest his points of view as well. So while we do that, uh, sure, I can share some of the things that I've seen. So basically, when you play the infinite game, or you have the infinite game mindset, there are five things which basically make the infinite game mindset. तो पहली चीज होती है कि आर वी गोइंग आफ्टर व्हाट इज कॉल्ड अ जस्ट कॉज, या कोई पर्पस है क्या? कोई इंस्पिरेशनल चीज जिसकी वजह से आप उस कोई या तो जॉब कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अ पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। सो इन माई लाइफ, most of the companies that I worked for, I have been very lucky. They had a purpose which was beyond just profits. Profits तो हर कंपनी का पर्पस होता है अगर बिजनेस कर रही है, पर उससे भी बड़ा कोई ना कोई मोटिव जरूर रहता था, चाहे वो कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ रहा हो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ रहा हो, या ओवरऑल अपने एम्प्लॉयज की तरफ रहा हो। आई थिंक वो कई बार हम भूल जाते हैं, बिकॉज like company like Google, where I worked for many years, I feel they had this huge thing about inclusivity and diversity about their own employees. So पहला पॉइंट मैंने बोला कि पर्पस होना चाहिए। सेकंड इज ट्रस्ट, ट्रस्ट इन योर टीम। कि बिकॉज ये कहना आसान होता है कि ट्रस्ट करना चाहिए, पर करना मुश्किल होता है। क्या आप ये खासकर मैंने देखा है, जब लीडरशिप की बात आती है, तो क्या आप अपनी टीम्स को एक एक कुछ गोल्स दे के छोड़ सकते हैं कि जाओ अब आप ये काम करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट अगेन टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, कल जब रोहित शर्मा बात कर रहे थे कि जब राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया, तो पहली चीज राहुल ने आके ये करी थी कि सबके रोल क्लैरिफाई करे कि अगर ये फला क्रिकेटर है, इसका टीम में ये रोल होगा, इस फला का ये रोल होगा, और उस फला का ये रोल होगा। और वो इनको पिछले 3-4 में बहुत साल में बहुत हेल्प किया, और आज और कल ऐसा दिन था कि एवरीथिंग केम टुगेदर एंड दे वर एबल टू विन द वर्ल्ड कप। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद, in my own experiences, the various businesses I worked for, I think I learned a lot from this, wherein
डेलीगेट कर पाया मैं बहुत सारी चीजें अपनी अपने टीम को सपोर्ट दे पाया उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। आई थिंक लीडरशिप में सबसे बड़ी बात होती है, इट इज नॉट अबाउट मी बिकमिंग सक्सेसफुल, इट इज अबाउट देम बिकमिंग सक्सेसफुल। क्या हम उस पर सोच सकते या नहीं सोच सकते। तीसरी चीज जो हम काफी बात करते हैं, चाहे वो मार्केट्स की बात हो या अपने लाइफ की बात हो, कंपटीशन कौन है। कंपटीशन को हम कई बार दुश्मन मान लेते हैं और हमारा सारा फोकस रहता है इनको हराएं कैसे। Whereas I feel it is not about competition, it is about having worthy rivals. क्योंकि जब आपके वर्दी राइवल्स होते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। You know, they help you become better. That's how one should look at competition. You know, I remember 20-25 years back जब मैंने काम करना शुरू करा था तो कोक पेप्सी राइवलरी की बहुत बातचीत होती थी। और मेरे ब्रदर कोक में काम करते थे तो वो बताया करते थे कि अगर पेप्सी पीते हुए पकड़े गए तो नौकरी जा सकती है। पर वही जब मैंने इंटरनेट बेस्ड कंपनियों में काम करना शुरू करा तो वन ऑफ द थिंग वी यूज्ड टू डू इज कि कंपटीशन के प्रोडक्ट्स हमेशा हम लोग जरूर ट्राई करते थे, चाहे जब फेसबुक आया फेसबुक या उसके आगे कुछ और आया, बिकॉज उससे हम सीखते थे, वो हमें पुश करते थे और बेटर होने के लिए। तो क्या हम वर्दी राइवल्स ढूंढ सकते हैं जो हमारे को और बेटर बनाएंगे हमारी लाइफ में, हमारी थिंकिंग में। इनफैक्ट इसका एक और एग्जांपल, आप आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग स्पोर्ट खेलते होंगे आज भी। तो आप उन्हीं लोगों के साथ खेलना पसंद करेंगे जो आपके जितना अच्छा खेलते हैं या आपसे बेहतर खेलते हैं, तभी आपका गेम इंप्रूव होता है। आई डोंट थिंक सो जो लोग आपसे ज्यादा अच्छा नहीं खेलते उनके साथ खेल के आप खेल सकते हैं उनकी वो खुशी देने के लिए, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको वो मजा नहीं आएगा, आप कुछ सीखेंगे नहीं उनसे। फोर्थ था इसके अंदर। So हाँ Nikhil, जी। sorry, Sandeep हाय here. संदीप। एक इसी इसी पॉइंट पे सॉरी फॉर नो जंपिंग वरीज इन, नो वरीज। एक इंटरेस्टिंग टिडबिट मुझे याद आ गई। स्पोर्ट्स, सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, यूजुअली क्या होता है प्रैक्टिसेस में पीपल डू बेटर एंड देन रियल सिचुएशंस दे डू बैड, बट विनर्स एक्चुअली डू अदर वे अराउंड। इनफैक्ट और भी एक स्पेसिफिक केसेस हैं इन साइकिलिंग एज वेल एज इन स्प्रिंट रनिंग, they always break records in real situations, never in practice. क्योंकि प्रैक्टिस करते समय कभी भी आपको मेंटली उतना प्रेशर रह ही नहीं सकता है। तो जब साइकिलिंग आप अगर अकेले कर रहे हो और आप वर्ल्ड लेवल के एथलीट हो, मे बी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, आपका कोई कंपटीशन आपके साथ खेल नहीं रहा है, तो कभी भी आप वो नहीं क्लॉक कर पाओगे जब आप एक रियल प्रेशर में कर रहे हो, जब आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पीछे से आपको शैडो दिख रही होती है, राइट। तो वो जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, इसका एक और मुझे जो, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ कंपटीशन एक्चुअली हेल्प्स, इट्स नॉट अ थ्रेट, कंपटीशन इज एक्चुअली अ ग्रेट इंसेंटिव्स, अ ग्रेट कंपटीशन, राइट। जितने भी बिग फीमेल टेनिस एथलीट्स हैं, they also have like very great male tennis players, ex tennis players as coaches. That is again कि आप जिसके अगेंस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर अभी इंडिया में शेफाली वर्मा ने कल डबल सेंचुरी मारी, राइट। And she is so awesome because she always played against boys in Haryana. तो दिस इज लाइक अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं नेचुरली इसके, कि आप जब अपने से बेटर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो, compete कर रहे होते हो, तो आपका लेवल्स और आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर निकल के आती है। और एक लास्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने माइकल पोर्टर की बुक में पढ़ा था, द एडवांटेज ऑफ नेशंस, राइट। वो हमेशा ये कहता है कि क्लस्टर कैसे बन जाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे इसमें बहुत कंपटीशन है, इसमें क्या है, इसमें मोट नहीं है, मोनोपोली नहीं है। वो मिसनॉमर है। Monopoly often makes companies very sluggish, very they lack incentive for innovation, to say per se, right. But आप बहुत ही competitive environment में हो तो जो winner है he will constantly innovate to even survive, not even to excel. तो उसका एग्जाम्पल है कि किसी भी आप सिटी में चले जाओ तो आपको एक पानी पूरी की दुकानें मिलेंगी। अगर वो अकेले है तो शायद नहीं चल रही होगी, बट बेस्ट मार्केट इज ऑलवेज देयर जहां पे 5 एक साथ हैं। तो अब वो पानी पूरी वाला बंदा, आप सोचोगे पानी पूरी कहाँ से आ गया बीच में, बट आई एम वेरी रेस्ट्रिक्ट गाय, माय एग्जांपल्स आर सिमिलर आल्सो। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वो सिंगल पानी पूरी है तो उसका कभी भी नहीं बिकेगा, बट जहां पे वो 3-4 लोग हैं तो वो भले ही वो आपस में देखेंगे कि इसकी वजह से मेरा कस्टमर बढ़ रहा है, बट वो होता रिवर्स है। क्योंकि वो लाइन से 5 लगी रहती हैं तो पूरी मार्केट डेवलप हो जाती है, एंड एवरीवन डज डबल द बिजनेस दे विल डू अदरवाइज एज एन स्टैंड अलोन एंटिटी और दैट शॉप। सो ग्रेट पॉइंट ऑन कंपटीशन एल्फे। नहीं बिल्कुल संदीप, आई थिंक आपने जो एग्जांपल दिए वो और भी इस पॉइंट को
बढ़िया से समझाते हैं, तो टोटली अग्री ऑन सम ऑफ दीज पॉइंट्स। स्पोर्ट के एग्जांपल से थोड़ा आसान हो जाता है समझना। इनफैक्ट मुझे लगता है कंपटीशन हमेशा हेल्प ही करता है अगर आपका माइंडसेट ठीक हो। मैं सिर्फ इसमें अंडरलाइन ये फैक्ट करूंगा कि आपका माइंडसेट अगर ठीक हो, ये नहीं है कि इसको सारे टाइम हराना है किसी को। इस पे जस्ट टू ऑन अ लाइटर नोट, आई रिमेम्बर एक मूवी आई थी रेस, जिसके अंदर सैफ अली खान और आई थिंक अक्षय खन्ना थे। तो उसमें उस फिल्म में एक डायलॉग आखिरी में बोला जाता है कि तुम मुझे हमेशा हराने के लिए खेल रहे थे और मैं हमेशा जीतने के लिए खेल रहा था। तो आई थिंक कई बार कंपटीशन आपकी थिंकिंग को मर्डर कर देता है और आप गलत चीजों में लग जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। एनीवेज, तो इससे आगे बढ़ते हुए जो चौथा पॉइंट था इसमें कि ये इन्फिनाइट गेम कैसे खेला जाता है, कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं या इन्फिनाइट गेम खेल पाती हैं, या हम इसे लाइफ में कैसे खेलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात होती है जिसको स्टार्टअप भाषा में बोलते हैं पिविट, या साइमन सिनेक अपनी बुक में इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। इसेंशियली ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि आपने बहुत समय लगाया कुछ सोचने में, रिसर्च करी, और उसमें स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से अगर मैं बोलता हूँ कि और आपको लगा कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया और हमने खरीद लिया, बट फॉर सम रीजन सही सीईओ चेंज हो गया, कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, रेगुलेशन नई आ गई, अगर कुछ हुआ और शायद थोड़े अगर स्टॉक डाउन भी हो गया, तो उस टाइम ये पिवट ले पाना कि भाई अब हमें ये डिसीजन लेना है कि इसमें रहना है या इसमें से निकलना है। या लाइफ, जब मेरे अपने करियर में ऐसा कई बार हुआ कि बिजनेस के कुछ डिसीजन हमें ऐसे लेना पड़े कि हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया और वो प्रोडक्ट जो सारी समझ लगाई थी कि ये ऐसे चलेगा, इतने लोग इसको यूज करेंगे, पर कुछ समय बाद पता चला कि ऐसा नहीं हो रहा है। then to be able to pivot and move to different thing and then start building again from scratch, I think वो ability, वो ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक लंबे टाइम तक एक इन्फिनाइट गेम खेल सकते हैं। And the fifth one, I say is one of the most important ones, is the courage to lead. Basically, big और bold decisions लेने की करेज है या नहीं है। ये अगेन चाहे आप वो कंपनी हो, उसके लीडर हो, एक मार्केट में कोई एक आप कंपनी या प्रमोटर को एनालाइज कर रहे हो कि क्या वो बिग और बोल्ड डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या वो ये कह पा रहे हैं कि हम तो ऐसे चलाएंगे इस कंपनी को, ये हमारी थिंकिंग है और ये कुछ बड़े डिसीजन हम लेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज हमें मालूम है कि हम लंबा देख रहे हैं, हम छोटा नहीं देख रहे, हम क्वार्टर वाइज नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस फॉर 10 years, 20 years, 30 years। तो जब हम ऐसी थिंकिंग लेके आते हैं तो आई थिंक उसकी हेल्प होती है ओवरऑल इन्फिनाइट गेम खेलने में। सो ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये मिला जुला के जब आई हैव अप्लाइड इन पार्ट्स ऑफ माय जर्नी इन वर्किंग एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट मार्केट्स एंड स्टॉक्स, so that really helps in putting together the learnings. Prince, did I answer your question? You did, Nikhil, and I really like the inputs. So, Nikhil, coming to investing, right? You just said that you apply this principle to market. So, would you like to help us? Like you shared some 4-5 pointers, basis that if you would like to more on explain, I mean, on the investing part, so that our audience can also relate to like when they invest, they can also try to imbibe the good side of it and become a good investor. So would like to know more from you, and even Sandeep can add after that. हाँ, इसमें कुछ तो मैंने ऑलरेडी जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था 4-5 पॉइंट बताए, उसमें आई थिंक मेनली मैं ये देखता हूँ कि कंपनी का मेन खुद का एक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आज चाहे हम ऐसी कंपनी की बात करने जो रिन्यूएबल्स में है, ओवरऑल इन्वायरमेंट में बिजनेस वो भले ही कर रहे हैं, पर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो फाइनली विल हेल्प अस ऑल इन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो कंपनी में वैसा कुछ है या नहीं है, कंपनी में लोग कैसे हैं, क्या ऐसा है कि प्रमोटर ही सारा काम करता है या उसने एक टीम बनाई है, उसके पास उसके पास अपने फाइनेंस के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, ऑपरेशंस के लोग हैं, एक एक सधी हुई अच्छी टीम है या नहीं है उनके पास। बिकॉज अगर अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, लंबे समय तक डटे रहना है, एंड इफ यू वांट टू प्ले द इनफाइनाइट गेम, देन यू विल हैव टू हैव अ गुड टीम इन प्लेस।
वो टीम है या नहीं है उनके पास. आई थिंक तीसरी पॉइंट ऑब्वियसली, अगर सी बिजनेस इज, दे ऑलवेज से business is always uncertain. There are always things that you don't know about which can happen tomorrow. तो अगर वो अनसर्टेनिटी है तो कितने फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस उस बिजनेस में प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम दिखा पाती है. चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, क्या वो फ्लेक्सिबल इनफ है या फिर वो अड़े रहते हैं अपनी बातों पे, नहीं ये ऐसे ही करना है. आर दे ओपन टू सजेशंस, आर दे विलिंग टू हियर पीपल आउट. तो वो एक और फैक्टर हो सकता है. एंड फाइनली, क्या वो समय समय पर बड़े और डिसीजन ले पाते हैं, बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं, या दे, बिकॉज वो भी विजन से आएगा उनकी कैसी है. सो इन 4-5 पॉइंटों को मिला के जब एक कंपनी की तरफ हम देखते हैं, प्रमोटर से बात करते हैं, तो समझ में आना शुरू होता है कि इनकी थिंकिंग कैसी है. क्या ये शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि आज कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इससे हमारे को आज शॉर्ट टर्म में फायदा हो जाएगा. वहीं पे दूसरे प्रमोटर होते हैं कि भाई हम एक तरीके से कंपनी बनाएंगे, फोकस करेंगे, और हम अगले 10, 12, 15 साल, 20 साल तक उसी तरीके से चलेंगे. So these are 4-5 points that at least I keep in mind when I'm looking at a company and exploring if I should invest or not invest in this company. So before coming to Sandeep, one quick question, Nikhil. So being in setting up businesses and leading across the value chain of different businesses, do you ever face some kind of hindrances or biases in the sense like that restricted you because when you yourself is into business or setting up businesses, you have some standards or kind of like because you will be able to judge the management better in comparison to the other retailers or so. So have you ever faced such kind of things in your investing? Always. I think अगर हम सब परफेक्ट होते तो फिर सब कुछ बहुत आसान ही हो जाता. आई थिंक आप सी, आई ऑलवेज फील ये सब एक असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी और कुछ एक्सपेक्टेशन सेटिंग का वो होता है. ये सब मिला जुला के आप एक डिसीजन लेते हैं. और जैसे एनी ड्यूक ने अपनी एक किताब थी थिंकिंग इन बेट्स में भी बोला था कि कई बार एक अच्छा डिसीजन जरूरी नहीं है अच्छा आउटकम लाएगा, और एक बुरा डिसीजन जरूरी नहीं है बुरा आउटकम लाएगा. कई बार एक बुरा डिसीजन अच्छा आउटकम ले आता है और कई बार एक अच्छा डिसीजन बुरा आउटकम लाता है. तो ये तो कंटिन्यूअस हो पाता है. पर इसमें होता क्या है, अगर आप गेम में हैं, अगर आप लंबे समय के खेल रहे हैं और आप गेम में हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप अपनी अपनी गलतियों से, अपने डिसीजन से सीखते जा रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होता है कि आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाती है. इनफैक्ट आई वुड से, फॉर मी दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग एज वेल. कि जब आप एक गेम में रहते हैं लंबे समय तक और ये चीजों को देखते हैं, तो चीजें फिर कंपाउंड होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी कंपाउंड होने लगती है. तो दैट्स हाउ I feel, yes, I've had my biases. I've had decisions which have not gone the right way. But yeah, you live and learn as you go along. Sandeep, anything you wish to add? A few things for sure, but Vineet is also in listener mode. If he wants to come as a speaker, has time. I mean, always good to hear from other speakers also. Uh, so, Prince and Nikhil, personally, given that a lot of us are also very actively involved in micro caps, right? वहाँ पे ये माइंडसेट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम जब ये इन्फिनाइट गेम्स की बात कर रहे हैं जिसमें रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, इन केस ऑफ माइक्रो कैप्स कई बार गेम ही चेंज हो जा रहा है कि वो बंदा अपने को फुटबॉल प्लेयर बोल रहा था और कुछ दिन बाद हॉकी खेलने लगा, जो कि सुनने में बहुत अजीब सा लगता है. मैं ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज को जानता हूँ जिसमें लोगों ने बहुत वेल्थ जनरेट की, एंड आई talking about time frame. 3 years, 5 years is nothing, is not even a pin drop in a long history, right? But still, some of the very famous companies, वो 3 साल
पहले उनके प्रमोटर जो बोल रहे Sandeep bhai, it's breaking in between, if you can check. आई वुड बेसिकली से कंपनीज भी कॉन्स्टेंटली अपना कोर बिजनेस मॉडल ही इवॉल्व कर देती हैं, और इवन जो बिजनेस कर रही होती हैं. सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप वर्सेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम्स इन. यूजुअली हम ग्रोथ को हमेशा ऐसे सोचते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं उसको हम लिटरली 5 गुना ज्यादा कर पा रहे होंगे. तो हर कंपनी के पास हम क्या जाके असेस करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप इतना रेवेन्यू कर रहे हो, इसको 5 टाइम्स कैसे करोगे, इसको 3 टाइम्स कैसे करोगे, राइट? दैट्स ऑल वी आर आस्किंग, because we are not trying to judge the softer aspect of that company valuation, which is the growth mindset, which is the learning mindset, which is the innovation mindset, which is the zeal of the team, right? Because that helps us assess कि बंदा विनर होगा. हो सकता है आज जो ट्राई कर रहा है उस पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ और कर रहा होगा. तो ये अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए भी ट्रू है, बड़ी कंपनीज के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू ट्रैक देम ऑन अ लॉन्गर हिस्ट्री पीरियड. आई मीन एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस what they were doing 15 years back, it's not like they are doing the same thing. I mean, obviously, automobile companies and Pepsis and Colas are exceptions कि वो एक ही business 100 साल से कर रहे हैं. But most of the modern day organizations, they start with X and they end up with Z, purely because they are constantly changing uh, what you call the game itself, right? दूसरा पॉइंट मैं इस पे जस्ट टू प्रॉब्ली वाइडन इट अप, those who invest know that poker is a very popular game amongst traders and investors, and there is a reason. It's almost like a show off also. You make some money and you want to say that I'm a poker player also. I'm a very average poker player. Tried very late. तीन पत्ती हमारे यहाँ ज्यादा चलता था in my part of India, and poker probably in elite game at least wasn't available in our area. तो मैंने काफी लेट स्टार्ट किया, बट एवरी टाइम आई प्लेड पोकर, वन थिंग आई रियलाइज दैट व्हाई इट इज सो टफ कंपेयर टू लेट्स से तीन पत्ती is because in three you do, I mean, I'm using some of these jargons who those who play these games will probably relate with it. For rest of them it may be little tricky, but you can do blinds, you can do bluffs, you can do variations little here and there, but that's it, right? Game is broadly done. तीन पत्ती आपके हाथ में आ गया, आपका दिन खराब है, you play for 3 hours 4 hours, you will just end up being a loser. In poker, because you start your game with 3 hands and then on the flop on the river you go like 4 cards 5 cards and then bet sizing, right? So that's what we mean by infinite game mindset, because cards are changing, bet sizing is changing. आप जब आपके फर्स्ट 3 कार्ड्स मिले वो अगर स्ट्रांग है तो 9 out of 10 times you will probably end up losing because you will do a wrong bet sizing. You have no idea what fourth and fifth card will be, right? So poker is an amazing game which basically trains your mind to act very fast with a constantly changing information on the flow. So markets are also like that, right? You take a bet, you understand something about a company. Within 1 month, 2 months, you get a different style of information which forces you to tweak your initial thesis, right? So that's how it is. And why are we discussing it? Shouldn't it all this be common sense? Obviously, it is common sense, but it has become more common sense in current world environment where technology is disrupting companies' life so fast, where because of digitization the life patterns are changing. I mean, think of our parents who probably had a same kind of a year and a life for like 40 years 50 years, same job, same cities, few transfers here and there. And I mean, there are pros and cons of every life, so I'm not even judging like what is right or wrong. I'm just talking about survival part of it, that in today's world companies and people alike, unless they are constantly learning, relearning, changing their patterns, skill set, etc., they will not even survive. And that's why the word survival is being talked so much, that even to survive is to win. So game is not to win. इसी को मैं एक और हल्का से एक्सपैंड करता हूँ प्रिंस, इफ यू अलाउ मी टू गो लिटिल लॉन्गर इन ऑप्शंस. आई मीन एफएनओ people who do derivatives, they will realize the mostly sellers make money and buyers don't, and there are very valid reasons for that. बट सेलर एंड बायर का माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होता है, बिकॉज बायर प्लेज टू विन and seller plays to not lose. So seller goes with that survival mindset where he knows that if I don't get knocked off, I will be end winner. But buyer knows that I have a limited life and I have to make it win. Because structurally seller is in a better position, because all he has to do is not get killed. Right? So there are games, most of the current life is slowly becoming
a style where game is to survive, not game is not to win. So those were the points which I wanted to add. But back to Nikhil, and then I can surely talk about few more things on similar lines. So, Nikhil, you have a really long career. So, would you mind telling us a bit about your corporate and startup journeys? Because, as you already talked about, these journeys are not linear, right? So, there are always, two sides to it, whether it will be successful or not. And it also gives you the thrill, or, you talked about mindset thing, right? So, would you like to talk more around it? So, yeah, Prince, I think the way I look at it, I don't look at anything as success or a failure. I think everything has been a learning, a stepping stone, जिससे कुछ सीख के आगे बेनिफिट हुआ और पीछे मुड़ के जब देखा तो वो डॉट्स अपने आप कनेक्ट हुए. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. I think the interesting part of my journey has been, like I initially also said, कि I got an opportunity to work with very small companies and also very large companies, whether in India or outside India. अब उस ऐसे जब आप काम करते हैं तो आप कुछ चीजें सीखते हैं. तो जब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करे, इनफैक्ट जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप ज्वाइन किया था yatra.com, जो आज के दिन नैस्डैक पे लिस्टेड है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड है. जब हमने वो कंपनी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम व्हाट केप्ट अस अवेक एट नाइट वाज कि हमें पता भी नहीं था कि लोग और ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ. उस टाइम मुझे तो वर्ड स्टार्टअप भी नहीं पता था जब ये कंपनी ज्वाइन करी थी. और हम लोगों के दिमाग में एक था, क्या कोई लोग आके ऑनलाइन एयर टिकट्स खरीदेंगे. कि उस समय ये होता था, मुझे याद है कि हम लोग या तो अपने नेबरहुड ट्रैवल एजेंट को बोलते थे भैया हमारी ये टिकट बुक कर दीजिए, या फिर बहुत जल्दी होती थी तो जैसे मैं दिल्ली में रहा करता था उस जमाने में, तो एयरपोर्ट भागा करते थे कि वहां पे एयर इंडिया की टिकट खरीद लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी काम कहीं आ गया, फिर वो फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे. तो हमें ये था कि क्या कोई ऑनलाइन खरीदेगा, और वो भी एक वेबसाइट पे जाएगा फिर वहां पे. और उस टाइम कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता था. जस्ट टू ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर वर्ल्ड, अनदर टाइम, बट इट्स जस्ट अबाउट यू नो less than 20 years back when this was happening. So I think that was very interesting learning. There was, and we did not have all the money in the world at that point in time. So there my learning was how to do less with more. कि जब बहुत कम पैसा होता है, हमारे को कंपनी बनानी थी, हमको ब्रांड बनाना था, हमारे को लोग लेके आने थे, तो वो सब हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में किया. तो एंड आई थिंक जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है, लोग बहुत कम होते हैं, आई थिंक काम बहुत अच्छा होता है. तो दैट हैज बीन a learning that I've always kept in my mind as I've moved along. इसी को अगर हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जब बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल में काम किया तो वहां सीखने को मिला कि स्केल कैसे करते हैं. आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच लॉन्च जियो इन द कंट्री. तो वहां पे जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में काम किया, वहां की लीडरशिप टीम में काम किया, तो ये समझ में स्केल कैसे करते हैं. कि आज आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है जिसमें आज आपको 100 मिलियन, 10 करोड़ लोग लाने हैं प्रोबेबली 100 दिन के अंदर. आपकी इस टाइप की विजन है, ऐसी एम्बिशन है, तो स्केल कैसे किया जाता है बिजनेस. या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में लोग हैं, उनके साथ मिलके कैसे काम करना है, उनसे कैसे सीखना है. तो वो सारी चीजें इस जर्नी में बहुत सीखने को मिली, कि हाउ टू फिगर दीज थिंग्स आउट. And one of the principles of my own that I developed along this way was, इतनी सारी जब लोगों के साथ काम किया, कंपनियों में काम किया, that I always try to look for the good. Because if you look for the bad, it is everywhere. But look for the good is very important. कि किसी भी चीज में हम अगर अच्छा खोजने की कोशिश करते हैं तो it helps us, you know, make better decisions. Negativity never helps. So I think वो एक बहुत बड़ी कोशिश रही. So, and this is a principle that I've always, lived by. कि I try to look for the good, whether it is in the business I'm doing, the people I'm interacting with, or the friends that I have. I try to look at some of these things as I think about life and my journey. Prince, back to you. Interesting. Sandeep, anything you want to add?
One dimension, since we always do these podcasts with somehow and trying to link it with markets also, because that's typically our common area of interest, is that when we talk about game is survival, then naturally the risk focus comes into the picture, right? And that's where the deeper understanding of what is a risk, right? So starting point of every risk is essentially, if अगर simple भी Google मार देंगे, तो risk is often considered synonymous as volatility, right? In fact, it is measured as volatility standard deviation, and there are infinite products trying to mitigate that. On the contrary, there are many seasoned investors who will often tell you volatility is their friend, right? With deep understanding, etc. So personally, I think more than the measurement, the understanding of risk is very important. Like, जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, वो ट्रेड है क्या, राइट? किस केस में वो वर्क करेगी और किस केस में नहीं वर्क करेगी. तो आई पर्सनली हेट पीपल हु से ये स्टॉक पक्का 10x जाएगा. मैं कह रहा हूँ 10 नहीं जाएगा, 100x जाएगा या कुछ भी जाएगा, डजेंट मैटर. Unless you can tell me in which all circumstances it can go to zero, you have absolutely no idea about that company, right? तो रिस्क की जो अप्रिसिएशन है और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ओवर एनालिसिस नहीं, बिकॉज एसेंशली मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ imperfect understanding. You'll never reach to the perfect understanding. But what is that point from where your risk reward becomes reasonable in your broader set of your risk reward targets? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए मैं हमेशा एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ कि देयर विल बी नोन unknowns and then there will be unknown unknowns. So I'll just copy a very famous term which was coined by basically defense secretary of USA back in Iraq war. उससे पूछा गया था कि आप क्या स्ट्रेटजीज कैसे ले रहे हो इराक में, आपको क्या पता है, और फिर बाद में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले थे, तो एक टर्म यूज हुआ जो फाइनेंस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बाद में पकड़ लिया, which is basically unknown unknowns. So unknown unknowns are nothing but things which you cannot plan. So death is certain, but when will it happen, we don't know. So it is a known unknowns. But COVID, we can broadly say, at least for our generation, it was unknown unknowns. A lot of people who are into biology or deeper history can say it is known unknowns, because every 50 years में होता है. But as a world, we basically responded as if it was unknown unknowns. There is no way anybody was even mentally prepared for it. Forget about any other preparation. So unknown unknowns के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. You, and that can never be priced in also. But known unknowns can always be priced in. So that is what I'll say when we are talking about survivals. We should have understanding of what kind of risks are taken. Taken risk in itself काफी बड़ा area है, तो Prince I'll not go very deep on that. But essentially, I mean, let's talk about FNO trading, right? So my biggest loss back in 23rd March during COVID was not because of market risk. I consider myself a reasonably okay option trader, but my biggest single day drawdowns, and some of my close friends know that, was because ICCI didn't work. Market open hua, Nifty gap down 10%, 1 hour, circuit locked, ICCI site was not working, and because of risk management, they closed my positions which were in losses. And when it opened, it started recovering and it went top up. ICCI was still not working. So I had large positions, I couldn't close it. They closed it systematically without any malaise. But on one side, they closed, which should have been much more profitable after 2 hours. So basically, मेरी पूरी hedging उन्होंने दोनों side में wrong side में cut कर दिया. And I felt very low for many months, thinking, how can I be so dumb? I'm basically a derivatives guy by profession. So it hits you a lot till one fine day someone told me, like, Sandeep, you didn't lose because of market risk. It is operational risk, which you should consider in your portfolio management. You should basically always remember that. Don't think that markets will be open and you will be able to trade. You will be probably out of network. Your site will not work. And that's an risk which you should consider in your strategies. If your strategy is such that you're locked out for 5 hours, 6 hours, and you're deeply cut, capital wise, then you are missing the appreciation of operational risk.
because you are going with an assumption that markets will be open and you will be also be open and you'll be able to manage it. But you may be locked out also because you're in a medical emergency. You can't be on system. You can't do anything about it. And that really helped me to overcome this entire thing. Obviously, I recovered all that money, made good profits and all. But more importantly, I adjusted my strategies to take care of that operational risk also. So that's what I'll typically say, like known unknowns, unknown unknowns. SME में we should always try to do mental positioning. It's good to be positive. It's good to be always super confident कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट हमें ये जरूर सोचना है कि अगर हम 70% 80% आजकल मैं देखता हूँ यंग क्राउड दे वांट टू बी ओनली इन एसएमई एज इफ इट्स सम काइंड ऑफ तमगा कि यार मैं तो केवल माइक्रो कैप ही करता हूँ, मुझे लार्ज कैप तो डम लोगों के लिए होता है, म्यूचुअल फंड उनके लिए होता है. दे शुड थिंक कि अगर 60% कैपिटल लॉस हुआ, नो मैटर कि उनके प्रॉफिट से हो या कहाँ से हो, राइट, विल दे बी एबल टू हैंडल इट इमोशनली? इफ इज आंसर इज यस, देन यस. एंड एवरी 3 year it happens, राइट. निफ्टी 20% कट लगता है. अगर निफ्टी पे 20% कट लगेगा तो कितनी भी अच्छी माइक्रो कैप हो और भले ही वो 2 साल के बाद रिवाइव हो जाए और 6 महीने के बाद रिवाइव हो जाए, डजेंट मैटर, राइट. आपके 3 महीने लाइफ के चले जाएंगे जिसको आप मॉनिटरी टर्म्स में कंपेंसेट नहीं कर पाओगे. You may become emotionally numb. Your personal life will suffer. Your work life will suffer. So those kind of things, I will say, like when we are talking about a game of a survival, we should always try to cut extreme loss-making positions, not in terms of trades, but even in the propositions of it. So that's where the portfolio strategies or overall risk management comes into the picture. So that's what I'll just add, Prince, that appreciation of risk and appreciation of how can we hedge those risks where market instruments are picking our strategies. Thanks, Sandeep. इन So, Nikhil, one इनफैक्ट question is for you इनफैक्ट from. प्रिंस इस पे एक चीज मैं सॉरी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक संदीप ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया रिस्क पे. एक तो मैंने बहुत सिंपलिस्टिक एक बार किसी एक बड़े इन्वेस्टर का वो पढ़ा था कि व्हाट इज रिस्क. रिस्क इज एसेंशियली नॉट लूजिंग कैपिटल एट अ वेरी बेसिक लेवल. तो बट आई थिंक द बड़ा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि हमारा ये जो हम रिस्क लेते क्यों है, या हम कोई कुछ डिसीजंस लेते इसलिए बिकॉज और या स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें हम बोलते हैं यूनिट्स ऑल नैरेटिव्स या ये सब परसेप्शन बेस्ड चलती है. इट्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व और उन सबके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं. Like the famous physicist Richard Feynman had said, physics would be much harder if electrons had feelings. So, but markets are much harder because people and investors have feelings. They have emotions. So I think that is what probably is, and even if you ask me, the same applies to business. Business is very hard because it's people who are running these businesses. And, there are times while they are very passionate about things, but there are emotions which take over and you take certain decisions. And that is why at times bad decisions bring good outcomes and good decisions can bring bad outcomes as well. So just thought I will add some of these things to what Sandeep mentioned. Yeah, Prince, back to you. Thanks, Nikhil. So, Suman Sujir has one question for you. He's asking, how do you identify promoters with infinite game mindset who are fair to their employees, play the long term, champion innovation, improve customer experience, and reward investors? It's a general statement, but again, he's writing, most of our Indian promoters seem to be greedy, out to make a quick buck. I think पहला point तो प्रिंस मैं बोलूंगा, I don't start with this mindset कि सब चोर हैं. आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट विद द माइंडसेट कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है, चाहे वो एसएमई है या बड़ा बिजनेस है, क्योंकि लाइफ में काम करना इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस बनाना इंपॉर्टेंट है. तो एक पहली बात तो एक उस पॉइंट से शुरुआत नहीं कर सकते कि ग्रीडी हैं सारे प्रमोटर्स और वो दे आर देयर टू टेक अवे आवर मनी. तो आई थिंक वो एक पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि जहां तक बात है तो आपको there are today many ways of figuring out कि प्रमोटर कैसा है, उसकी टीम कैसी है, उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट होता है कि उनका प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा रहा है. नाउ बैकग्राउंड डज नॉट ओनली मीन कि वो आईआईटी आईएम से पढ़े हैं, वो तो एक अच्छा बैकग्राउंड है ही, पर साथ में क्या उन्होंने समय लगाया है कि
कंपनियों में काम किया और उस एक्सपीरियंस को लेके अपनी ये बिजनेस स्टार्ट करी है। दूसरा आप देख सकते हैं आज के दिन पे लिंक्डइन पे जाके, ग्लास डोर पे जाके, कई जगह जाके आप एम्प्लॉयज के फीडबैक पढ़ सकते हैं। उससे आपको पता चलता है कि हाउ दे आर दे ट्रीटेड इन अ फेयर एंड ट्रस्टेड मैनर और नॉट। बिकॉज हमें सबको पता है, हम रिव्यूज यूजुअली जब ही लिखते हैं जब हमें कुछ नेगेटिव बात करनी होती है। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ और हम उसके बारे में या उस कंपनी के बारे में रिव्यू लिखें। आप लोग सब उबर ओला में ट्रैवल करते होंगे, कितनी बार हुआ है कि आपने ओला उबर के बारे में रिव्यू लिखा है, रेटिंग नहीं दी है, जब आपके साथ अच्छा हुआ है। आप यूजली जब लिखते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, ड्राइवर अच्छा नहीं होता, गाड़ी अच्छी नहीं होती या और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप इन जगहों पे जाके देख सकते हैं। प्लस आई थिंक आई लुक एट essentially how the performance of the business has been, and are they thinking long term, especially if you get an opportunity to read about it और टॉक टू द प्रमोटर। क्या ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम ये कर देंगे जी, इतना बढ़ा देंगे, या फिर वो ये लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं कि नहीं, आज ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हम ये डिसीजंस ले रहे हैं जो हमारे को अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में हेल्प करेंगे कंपनी को आगे ले जाने में, और जिससे हमारी और हमारे शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ क्रिएशन होगी। तो इस टाइप के आप कुछ चीजें आप देख सकते हैं। See, today the information asymmetry is not there as much, जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। I think it's much more easier today to go and figure out a lot more about companies, promoters, and even the way they are running their business. So थोड़ा effort करना पड़ेगा अपनी तरफ से, and probably you'll get some of this information which you can then triangulate and make a decision. Right, Nikhil. Nikhil, you must have. Okay, Sandeep. Yeah. No. Carry on. I was just trying to add to the chatter, but please continue, Prince. So I was, although few of them you already highlighted, but let's talk about the high points and low points and the times when there are low points in the business or maybe the startups. Those are really tough times, and getting out of those really takes courage, hard work, and whatnot, right? So would you like to throw some light on, throughout your career, maybe some high points and low points? I think high points तो वही है जब आपने कुछ डिसीजंस लिए और वो ठीक गए और वो ब्रांड्स या वो कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में फायदा करे। तो इनफैक्ट सिंस वी आर लाइक मेंशन, अभी क्रिकेट का सबके दिमाग में चल रहा है, कल ही वर्ल्ड कप जीते हैं। इट टेक्स मी बैक ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स बैक, 2010। उस समय मैं गूगल में काम करता था, यूट्यूब भी मेरे अंडर आता था, और वी वर द फर्स्ट वंस, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, टू ब्रिंग यूट्यूब लाइव ऑनलाइन, यूट्यूब पे आईपीएल लाइव ऑनलाइन। बहुत लोगों को लगता है ये हॉटस्टार पे आया या जियो पे आया, पर सबसे पहले यूट्यूब पे आया था आईपीएल लाइव, और हम उसको 200 कंट्री में हमने पहुंचाया। इट वाज इट्स सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ आईपीएल, and I feel that was an amazing high point, because हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट बन जाएगा या हम इसको इतनी सारी कंट्रीज में व्यूअरशिप लेके आ पाएंगे। उसके बाद तो आई थिंक इट इज हिस्ट्री, एवरीबडी नोज how the thing has panned out in last 15-16 years, but I think the way we went about building that using a very अनटेस्टेड चैनल लाइक ऑनलाइन उस समय पे, वो एक बड़ा हाई पॉइंट मैं मानता हूँ, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर्स। जहां तक लो पॉइंट की बात है, तो अगेन इट्स नॉट सो मच अबाउट लो पॉइंट और फेलियर की वाली बात है, पर जैसे मैं एक ई कॉमर्स कंपनी बीच में चला रहा था कुछ साल पहले, उसको भी आज 7-8 साल हो गए। तो जब आप कोई भी कंपनी चलाते हैं तो कुछ डिसीजंस आप लेते हैं और कुछ चीजों पे आप रिलाय करते हैं, और वो चीजें वैसी नहीं हो पाती है। जैसे स्टार्टअप के केस में फंडिंग इज समथिंग दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, व्हाइल यू आर डूइंग, यू आर सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड बिजनेस, बट उस बिजनेस को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए आपको चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़े या मार्केट जाना पड़े। तो 2013 में, अभी भी पिछले 1-2 साल में लोग कहते हैं फंडिंग विंटर रही है स्टार्टअप्स में, उस समय भी वो
फंडिंग विंटर एक आई थी, और उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमारे को अपना बिजनेस को बहुत स्केल डाउन करना पड़ा, बहुत बेसिक्स पे लाना पड़ा उसको, कि सिर्फ हम सरवाइव कर पाए। संदीप भाई बात कर रहे थे अभी कि सर्वाइवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवन व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, आई थिंक सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उस समय उस लो पॉइंट में भी सबसे बड़ी लर्निंग यही थी, हम सरवाइव नहीं कर पाए, वो कंपनी बंद हो गई। पर व्हेन आई लुक बैक आई फील अगर किसी तरह 3 महीने 6 महीने और सरवाइव कर जाते तो थिंग्स इंप्रूव हो गई थी, फंडिंग शायद मिल जाती और वो कंपनी आज भी चल रही होती। तो आई थिंक इस तरह के कुछ काफी सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही अच्छी गई और कुछ इस तरह की भी चीजें हुई जिसकी वजह से, बट देन ऑल डॉट्स डू कनेक्ट, कहीं ना कहीं ये सब लर्निंग आगे हेल्प करी। Sandeep, any thoughts? I'll probably I always work with a lag. थोड़ा टाइम लगता है मुझे सोचने में और रिएक्ट करने में. To the previous point, which Nikhil bhai was saying that if only electrons had a feeling, physics would have been much tougher. In fact, flip of it, I mean, everyone knows Newton, and most of us only think of him as a mathematician or physicist, but he was actually much more than that. He was uh, I mean, you come to UK, you'll realize that he was into politics. Greenwich जो पूरी clocks का है वो उसने काफी मतलब he was literally no less than Michelangelo. Obviously, a lot of people claim that he did a bit of plagiarism, etc. Keeping those sides aside, there is a very famous statement by Newton that he can, handle the physics particle, but he can't handle human emotions, and that is why because he lost crazy money in what we also know as South Sea bubble. So basically, 17th centuries में यूके में एक शिपिंग कंपनी थी जो कि 6% इंटरेस्ट देती थी, और वो शिपिंग कंपनी बेसिकली अफ्रीकन स्लेव्स को पुर्तगीज कॉलोनी स्पेनिश कॉलोनीज में लेके आती थी, पर और उसके जो सर्टिफिकेट थे वो बहुत ज्यादा उस समय डिमांड में थे, एक मेनिया था, राइट. So Newton was a failed investor, and then he obviously tried his best. He must have tried to understand how markets work, and he struggled, right? So that is the most amazing part about all this, is that while we learn any skill as if everything will work. So the difference between humanities or science is science may x plus y will always be z, but in humanities it always depends. उस बंदे का मूड कैसा था, उसका वाइफ से कुछ लड़ाई हो गई थी क्या, जनरल क्या चल रहा था, राइट. सो इमोशंस हैव नो लॉजिक. सेम इन्वायरमेंट में अलग तरीके के आउटपुट्स आते रहेंगे बार बार. So, I mean, if Newton can struggle to figure out the mechanics of markets, then who are we? So, but at the same time, एक और चीज प्रिंस एंड निखिल मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि मैं मोस्टली इस तरह के स्पेसेस में भी आता हूँ, या मैं कहीं पे 1-to-1 पे भी बात कर रहा होता हूँ, तो मैक्सिमम लोग मुझको बोलते हैं यार आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बात करते हो, ऐसे क्यों लगता है कि डरा रहे हो, तो व्हाई आर यू सो एवर्स टू रिस्क. देन आई ऑफन जोकिंगली आस्क देम कि आपका कितना परसेंट पोर्टफोलियो इक्विटी में है, और आपने उसमें से कितना डेरिवेटिव्स में या कितना एसमी में डाल रखा है. एंड वंस दे वी स्विच बेसिकली एक्सचेंज नोट्स ऑन आवर रिस्क एलोकेशन, दे गेट स्टन्ड. दे से यार तुम तो बहुत रिस्की पोर्टफोलियो लेके बैठे हो, तो ये हर समय रिस्क की क्यों बात कर रहे हो. Isn't it like hypocrisy to take so much of risk and then always talk about being risk averse? I say I'm mostly not even talking to others, I'm talking to myself, and that is just to ensure I'm risk aware. So being risk aware doesn't mean you won't take risk. It's just you are situationally, mentally, strategically, and mathematically aware of the risk you are taking. So by no means we are saying that we should be so analysis paralyzed that we do nothing. Obviously, that's even bigger risk. But the whole game is to always understand risk even better. And in fact, that is one reason. I mean, most of us know it, but still, economics is only non-scientific Nobel Prize in a way, right? And economics department हमेशा humanities के अंदर रहा है. The modern economics, which is econometrics, has become part of mathematics department, but mostly economics is always humanities, and that's why economics is never easy. And obviously markets are applied extension of economics in a way, purely because it is just not maths or some science alone. It is obviously emotions also. And for two reasons, in fact, most of you know that behavioral economics के काफी सारे ट्विटर में भी आते रहते हैं,
बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बट जो उनके गॉडफादर थे, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड लाइक just in March this year. So he got Nobel Prize, right? But he was by profession was a research psychologist, right? So a psychologist getting economics prize basically tells you about the point which Nikhil Bhai was trying to make, that no matter how much you analyze, end of the day, a lot of market reactions are nothing but emotions. And that is where, in fact, technical trading comes into the picture. I'm personally not a big fan, but I still appreciate that art because in short run, emotions can take over the rationality. In longer run, obviously, rationality will always kick in. So जो लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं वो टिपिकली लॉन्गेस्ट टर्म्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल पे इसलिए फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि फंडामेंटली जो भी होगा डजंट मैटर, शॉर्ट रन में ये होने वाला है, एंड आई हैव दीस टूल्स बाय व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट दैट. So yes, I mean, markets is about emotions, and we should be situationally very aware about all behavioral economics related plays. How there is survivorship bias for every one trader. There are 100 who failed, who lost their shirt, but no one talks about them. Everyone says कि इस बंदे ने 1 करोड़ डाल के 50 करोड़ डाल दिया, उसी में वो किसी को एक्चुअली पता भी नहीं है. So a lot of times such posts or such communication doesn't have any malice. So unfortunate part of survivorship bias is that winner takes it all. That's how the world has become. तो जो जीता वही सिकंदर या उसी की ही कहानी है. History is nothing but an fable agreed upon, right? So you always hear the winner's story. No one is interested in hearing loser's story. But without understanding the other side of it, you'll never get the complete picture. Back to you, Nikhil bhai and Prince. Yeah. So, Nikhil, like you talked about courage thing. So, basis your 25 plus years of experience, how had been the craft in the sense like when we start, our age is different, our passion is different. As we grow, we learn, we mature. Do you believe the risk-taking appetite or capacity remains the same, or it also has some sort of curve during the lifetime? प्रिंस से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर इट बिकॉज मेरे साथ थोड़ा रिवर्स हुआ है. आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर आई वाज अ लॉट मोर रिस्क अवर्स, एंड एज आई हैव गॉन थ्रू लाइफ आई हैव बिकम मोर रिस्क टेकिंग. तो जबकि आई थिंक जनरल परसेप्शन या जनरल ट्रेंड ये रहता है कि आप व्हेन यू आर यंगर यू टेक मच मोर रिस्क, लाइबिलिटीज नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. मे बी अभी आपकी फैमिली भी स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको लगता है आप बहुत सारे रिस्क ले सकते हैं. But as you go through life, I think you have various things that you need to take care of, and your risk-taking abilities can go down. But at least in my case, uh, I think I have become more risk-taking, and the reason for that I feel is as I've gone through life, I think it is one is the experiences that you have that teach you certain things, and secondly, I think the ability to understand a bit more about people, ability to understand a bit more about how businesses are run, how people think. As you learn more and more about these things, I think they help you, what I call train your gut. हम बहुत बार बोलते हैं ना यार, गट फीलिंग आ रही है ये चीज ऐसे होगी, पर मुझे लगता है गट फीलिंग और कुछ नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो सीखा है, आपकी लर्निंग्स हैं जो आर हेल्पिंग यू. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर गट, and then you start taking certain decisions. So that's how it has been for me, at least, uh, you know uh, as I have gone uh, through this journey. Sandeep, you wish to add something to it? I mean, how had been in respect of your journey? I'll give it a pass purely because I wasn't very alert in listening the question, or maybe you, if you want to repeat. I'm just So walking around basically, also. yeah, we were discussing about the risk-taking capacity, right? Nikhil just told about him, like it had been the other way around for him initially. He was kind of conservative, if I assume it right, and going forward, he progressed on taking more risk down the curve as he had grown the ladder in his career. So how had it been for you, and how you take it at this point in time?
इसका वही है, इतना बड़ा आंसर पूरे अपने अपने, रिस्क बहुत बड़ा टॉपिक है प्रिंस भाई, और बहुत ही पर्सनलाइज हो जाता है. बट लेट्स स्टिल ट्राई टू डेवलप सम फ्रेमवर्क्स और ट्राई टू आंसर इट. First of all, it really depends where are you at Maslow's hierarchy, right? And since I'm assuming that we are talking about risk in a very narrow sense of markets and money, etc. Sometimes risk by nature can be something else also, right? Which can be you are in peak of your corporate career, you just felt like doing something for society, you left that job, you did something else because you are feeling the risk of missing the purpose of life. So keeping those abstract topic sense of risk aside, talking in very narrow sense of money and markets and risk, I think ultimately it depends कि आपके basis कितने covered है, right? If you are someone coming from a background where you have your basis covered, your wife is working, your parents are well off, or you do not anticipate major medical needs, your ability to take risk obviously grows dramatically. So even though the theory says that early in the age you should be taking a lot of risk, I personally feel there is hardly any capital base, so you shouldn't be even focusing on risk and return rather than एक बहुत ही फेमस इनफैक्ट रिडिक्यूल टर्म है भाई चमत, ही सेड लाइक 6 months बैक, बी इन देयर ना, जस्ट बी इन देयर ना, लाइक अंदर एक बार बैठ तो जाओ ना, देखो कि चल क्या रहा है, गेम हो कैसे रहा है. सो 20s में यार अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस मनी, खुद के कुछ सेविंग तो होती नहीं है. सो आई ऑलवेज सी इट एज अ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फाइनेंशियल कैपिटल और मनी कैपिटल काइंड ऑफ ए ट्रेड ऑफ. तो अर्ली एज में हमारे पास केवल ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास 30-40 साल की जॉब बची है, अर्निंग पोटेंशियल बचा है, बट हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल बहुत कम है. तो वहां पर रिस्क ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, हाउ डज इट इवन मैटर? गेम इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग. The sweet spot of risk taking typically comes in 40s and 50s. So I see it as we start, and this is I'm talking about a generic sense. Obviously, सबके experiences अलग-अलग होंगे, but sad part of this entire capitalist system is there is employee, then there are entrepreneurs, and then on top of it, the capital guys, right? And you basically traverse that journey from Kandivali to Andheri to BKC. Those from Mumbai will understand that, and not BKC, maybe Worli, South Mumbai. So you start as an employee, you try to become an entrepreneur, and then towards the end, you again become passive risk taker, where there is perception of huge risk, but you are essentially not taking any risk. Capital खींचता है types. तो मैक्सिमम रिस्क मुझे लगता है कि 40s में ही लेना चाहिए, क्योंकि दैट इज द टाइम टू टेक रिस्क. एंड 50s 60s के बाद यार रामायण पढ़ने का समय आएगा, क्यों रिस्क लेना है, even if you can afford to. There are broader purposes in life. But 20s में you shouldn't be too fixated about what you are trying to do. Game is again about survival. If you spend enough time, you do not get bored. I mean, I consider markets as probably a better version of going to gym or going to guitar. सब कोई लाइफ में ये जरूर करता है कि 5 बार जिम जाता है, 5 बार गिटार की क्लासेस लेता है, और 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो डिसोरिएंटेड होकर के छोड़ देता है. मार्केट्स में भी आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, नॉन मार्केट्स के बंदे, वो बोलेंगे अरे बेकार चीज है, मैंने ट्राई किया था, बहुत समय वेस्ट होता था, कुछ रिटर्न नहीं बनता था, तुमको भी बाद में समझ में आएगा, राइट? बिकॉज दे वेंट सो अग्रेसिवली इनिशियली that they obviously lost money and then in return lost interest. Instead of that, if they would have done what we call a slow game, which is basically to survive, the amount of learning they would have got in 5 years 10 years of market cycles, जिसको बोलते हैं ना, be in the market. उसके बाद ब्यूटी ऑफ मार्केट्स इज इट्स ए नॉन लीनियर वर्ल्ड, इट्स नॉट ए लीनियर वर्ल्ड. तो आपकी स्केलिंग या आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी तेजी से चेंज हो सकती है कि आपको सडनली लगेगा कि आप 10 years तो इंटर्नशिप ही कर रहे थे, आपका 1 year में वो सारा 11 year का मार्केट ने आपको दे दिया, मार्केट लाइफ बिजनेस जो भी कही है. तो आई सी इट रिस्क एज अ फंक्शन ऑफ how much your bases are covered and what age bracket you are in. Personally, I feel like I'm into that sweet spot for from last 5 years and will probably be there for another 5 years. Sorry for long and incoherent answer, but Prince, you know me, and that's how I think and I talk. Thanks, Sandeep. And for our audience, we can take a couple of questions if there are. Questions in the comments I have already taken. So we got one speaker. So let's see what Himanshu has to say. Himanshu, you can unmute and ask your question now. Thank you, Prince, for giving me the opportunity to speak. And Sandeep bhai, I am a big fan of yours. Learning
too many things from your spaces and your Twitter comments. Thank you very much for that. I'm not sure what's the topic of this space as I've just joined. I just want to know that going forward, what is the future of the renewable energy stocks? And Sandeep bhai, I've been taking suggestion from him on few of the stocks, and he's been kind enough to revert to a nobody. So if he could please elaborate a little on the renewable energy. So Nikhil and Sandeep, I would appreciate like if we can answer this question in terms of like how we can relate it with the infinite game because it's kind of a little off topic, but again we can try to take that. Sandeep first. Himanshu, first of all, you were too generous with a lot of your praise, but I'll not extend the topic by even answering and trying to counter it. And frankly, I don't recall you responding to you, but then as a rule, I respond to everyone purely because I have a lot of time and I'm also nobody. So nobody replying to nobody doesn't matter much. But coming to your question, renewable, यार मैं आज से 6 months पहले तक मैंने उस स्पेस को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत सिनिकल बैकग्राउंड से माइंडसेट से था इतने साल से मैंने पावर थीम देखी थी होता क्या है जब आप थोड़े लंबे समय से मार्केट्स में होते हो तो नेचुरली आपके बायसेस इनबिल्ट हो जाते हैं सो आई वाज वेरी लेट इन अप्रिशिएटिंग दैट आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड माय वे ऑफ लुकिंग एट दैट स्पेस there is surely a lot of work I mean factors are well known the intensity is not known so what is happening is कि हम 15 साल से रिन्यूएबल की बातें सुन रहे हैं इंडिया जैसे कंट्री में पावर की नीड है नो ब्रेनर है राइट वर्ल्ड सरवाइव नहीं कर सकता फॉसिल फ्यूल्स में सबको पता है बट ये बात तो 2005 में भी पता थी 15 में भी पता थी 22 में क्या हो गया अचानक से इंडिया में राइट सो अगर आप सोलर का भी इंस्टॉलेशन भी देखोगे चाहे अवार्ड भी देखोगे तो ठीक है 2020 21 22 कोविड मान लेंगे बट 23 में भी कुछ ऐसा खास अचानक से क्या हो गया कि इतना अवार्ड हुआ राइट एंड वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट तो मैंने यूजुअली मेरी जो ट्विटर पोस्ट होती हैं ऐसा लगता होगा कि लोगों को समझाने के लिए बट आई हैव ए सिंपल हैबिट ऑफ कि अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मैं उसको कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ और नेचुरली वो ओरिजिनल थॉट्स नहीं होते हैं कुछ कॉपी पेस्ट होता है कुछ रिसर्च होता है कहीं से मैक्सिमम टाइम से स्क्रीनशॉट होता है तो मैंने रिन्यूएबल्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिकेशन की जो थीम है वो समझने की कोशिश की प्लस आई वाज लकी टू बी इन टच विथ समवन लाइक राजेश सिंगला I mean, most of you know him, but he's very learned, and especially his understanding of power sector is very high, and his style is very different than mine. So we often talk a lot, but then we rarely copy each other on our stocks. But he helped me understand the entire set of companies. He actually literally nudged me, and then I'm so happy to onboard Oriana via pref very late. I mean, company was known to me, people were telling, but I was just under appreciating the intensity of that company. And I'm not talking about one company here, right? The entire space. I've invested in a couple of solar renewables pre-IPOs also. I recently did a pref in Viviana Big One. विवियाना में मेरे पास पहले की भी पोजीशंस पड़ी हुई हैं तो पावर ट्रांसमिशन तो वो मैंने पिछले 3-4 महीने में ग्राउंड लेवल में पता करने की कोशिश की समझने की कोशिश की डिफरेंट डिस्कॉम्स में कि यार ये रियल वर्क है कि ऐसे ही चल रहा है ऐसा तो नहीं कि 1.5 महीने के बाद क्योंकि हम लोग जो प्राइस पे कर रहे हैं करंट उसमें वेरी टफ टू गेस बट मैन मार्केट ये मान के चल रहा है कि 5 साल का तो बूम है ही है एंड मे बी 15 इयर्स का एक परमानेंट न्यू एसेट क्लास डेवलप हो रहा है और इसमें हिमांशु क्या हो रहा है कि जब मैं बिजनेसेस से मिल रहा हूँ ना तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक स्पेस में बोला था मेरे लिए वो स्टेटमेंट्स ज्यादा स्टर्निंग होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स बायस होते हैं जैसे ही वो होटल में लगा देगा उसको हर जगह होटल ही दिखेगा उसको लगेगा दुनिया में बस होटल इंडस्ट्री ही चलेगी बाकी कुछ नहीं है तो वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग राइट यू इन्वेस्ट एंड यू स्टार्ट गेटिंग कन्फर्मेशन बायसेस you basically look for news which basically confirms your thesis but businessmen are usually much more smarter and they understand their risk especially when you push them towards investing more तो अगर आप किसी प्रमोटर से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या बिजनेसेस से आप उनसे समझने की कोशिश करो कि यार वो कैसे स्पेस को देखते हैं तो मैं पर्सनली एक एक्सपीरियंस बताता हूँ एक प्रमोटर जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है
I mean, some of you in this call can guess which company I'm talking about because it will come for IPO in a couple of months. A lot of us did pre-IPO. I did a big stake there. So we were just trying to understand from this gentleman कि आप सर सोलर ईपीसी में क्यों नहीं जाते हो. बोले नहीं जाना है, समय नहीं मिल पा रहा है, बट आप लोग इतना कह रहे हो तो कर लेंगे. And some investors were nudging them saying कि आप सोलर में चले जाओ, मल्टीपल्स अच्छा मिलता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में उतना मल्टीपल्स नहीं मिलेगा जितना सोलर का मिलेगा. तो इन्वेस्टर हैड अ वेरी नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ट्राइंग टू नज हिम टुवर्ड्स इट. एंड देन ही कैजुअली सेड हाँ नहीं आपकी बात तो सही है, उसमें मार्जिन ज्यादा हैं और वो 15-20 साल चलेगा. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अभी 5-7 साल के बाद मेंटेनेंस जोन में चला जाएगा. इट वाज अ वेरी कैजुअल कमेंट, राइट? एंड सम ऑफ दोज कमेंट्स वेयर ही इज नॉट इवन फ्रॉम दैट सेक्टर एंड ही इज सेइंग कि हाँ सोलर ईपीसी का काम 15 साल चलेगा. दैट मीन्स पीपल हु आर ऑन ग्राउंड आर थिंकिंग ऑफ दिस नॉट एज अ 2-year फैड, राइट? तो अगर हम स्क्रीन से देखेंगे, उसको मनी कंट्रोल से समझने की कोशिश करेंगे या ओल्ड टाइमर से समझने की कोशिश करेंगे, हम मिस कर जाएंगे. अगर हम ग्राउंड अप में करके जाएंगे, a lot of people, and why only Mr. Rajesh Singla, there are so many people on the street, especially in SME space, who made crazy money in last 2 years, 3 years, because they probably had their ears on the ground, right? Some of us are in a way late to miss that kind of a crazy money, which I don't think will repeat, but there is still a decent compounding kind of an opportunity here where businesses can grow at 50-60%, 40% for 3-4 years, then peter down at 20%. Margins will surely shrink as more companies will come. But the reality is stocks can easily do as a sector 30-40% kind of a compounding, no-brainer compounding for 5 years, 10 years. So typically what we call a tailwind of for a particular industry. Within that, obviously, you have to very smartly pick your companies, which is a broad topic, and let's keep it on the side, DMs, etc., because that's always individual assessment and no one knows anyway. But renewable को miss करना, Himanshu, being in India as an active investor in market will be probably too risky right now, in spite of these crazy valuations. So that's all I'll say. The beauty is the listed space is very crazy valued, but unlisted space क्योंकि वो अभी भी market में आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत opportunity है, because वहाँ पे अभी उतनी irrationality नहीं है. So I'm trying to pick pre-IPOs and some of those companies which are switching from X to Y kind of a play, where I am still able to pay, let's say, logical valuations instead of lofty valuation where, stock is already pricing perfect until 2027. Right, Sandeep. So, Cheryl, you can Thank you, unmute and Sandeep bhai. Thank you so much. Yeah, welcome, Himanshu. Hi, sir. So, I learned that you have, experience of working at Geo, and we have seen Geo launch at large scale, as well as sustain at that scale with good enough margins. But on the other side, we have seen various startups, for example, Dunzo or even Ola, where valuation has reduced by close to 75%, who achieve a certain level of scale, but are unable to sustain the same. So, from your experience, what is it that, a management does differently, or there is difference in mindset that leads to, success at such a large scale where they can also, sustain it? Is there anything difference in decision making or mindset, according to you? Because Uh, passion is common, right? In both the cases, where a right, promoter is passionate. right, Cheryl. I think that's a good question. I feel one thing I feel very strongly, हमें जिस भी आप स्टार्टअप्स का या नई कंपनियों का आप नाम ले रहे हैं, आई थिंक थोड़ा समय देना पड़ेगा. आई थिंक वी शुड नॉट जंप इनटू पासिंग जजमेंट्स टू सून. एक रिलायंस जैसी कंपनी जिसने जियो लॉन्च किया, आज वो करीब 50 साल से ज्यादा से बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग टाइप के. तो उनका जो एक्सपीरियंस है कि बिजनेस को कैसे बनाना है, बड़ा कैसे बनाना है, लॉन्च कैसे करना है, वो उन्होंने इतने सालों में जीता. दे हैव बीन देयर प्लेइंग द इन्फिनाइट गेम फॉर सो मेनी इयर्स. अब ये जो स्टार्टअप्स आए हैं, ये सब बड़ी यंग कंपनी है. कोई 2 साल पुरानी है, कोई 3 साल है, कोई 10 साल पुरानी है. इससे ज्यादा पुरानी नहीं है ये कंपनियां. तो हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा. आई थिंक वील हैव टू बी पेशेंट. I am very optimistic about many of these companies that, if we, give them that kind of a time frame, I think their founders are quite exceptional. Their promoters are quite exceptional. They're building great teams, solving genuine problems. I'm sure many of them will survive
after 15, 20, 30 years have great valuations, will also generate wealth for themselves, and as and when they come to markets, probably generate wealth for others. एंड और ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी के फेल्ड वेंचर्स नहीं होते. आई एम श्योर इन दी जर्नीज ऑफ 40-50 ईयर्स सबके कुछ फेल्ड वेंचर्स भी होते हैं, पर वो शायद हम भूल जाते हैं. हमें सिर्फ सक्सेसफुल चीजें याद रहती हैं. तो आई थिंक दैट्स हाउ आई लुक एट इट. I would say we just need to give them time, and gradually we will start seeing winners emerging from these smaller companies and startups as well. Like even Sandeep spoke about, I think newer and newer themes are coming up, and I'm also very new to micro caps or SME, and I'm discovering some amazing businesses I never thought existed or are out there. So I think it's all about, and many of them are doing well today. It's not because they launched 2 years back, because they launched 2 decades back. So I think थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, and then we will be able to see how they fare. Did I answer your question, Cheryl? Yeah, that does help. That does provide a perspective. Thanks. Can I speak? Yeah, go ahead, sir. संदीप भाई, ये आप प्री आईपीओ शेयर्स मतलब कोई प्लेटफॉर्म है या फिर किस तरह से करते हैं? प्लेटफॉर्म भी है. कुछ फेमस एसमी इन्वेस्टर्स हैं हु आर हेल्पिंग रिटेल पार्टिसिपेट इनटू इट. मैं एक पहले से डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ, प्योरली बिकॉज ऑफ माय पोर्टफोलियो साइज एंड प्रॉब्ली अ लिटिल बिट ऑफ गुडविल एंड वेल विशेस ऑफ like-minded investors. I get the kind of deals which probably won't be available to everyone. So on the contrary, just because सब pre-IPO है, आप उसको blindly ये मत मानिएगा कि pre-IPO is better than listed space. उसके रिस्क अलग है. 18 months की लॉकिंग है, रिस्क ऑफ नेवर गेटिंग एन एग्जिट है, रिस्क ऑफ वेरी पुअर ड्यू डिलिजेंस है. इनफैक्ट हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्पेस किया था, आप प्रिंस की टाइमलाइन पे देख लीजिएगा, उस पर प्री आईपीओ में है. तो आई विल से कि इवन बिफोर जंपिंग इनटू इट, वो आधे घंटे 1 घंटे का स्पेस है जिसमें हमने कई लोगों ने मिलकर काफी डिटेल में बात की थी. बट टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसी स्पेस में भी बहुत सारे लोग हैं. आप मुझे डीएम करिएगा, मैं कनेक्ट करा दूंगा विदाउट एनी मतलब आप और भी हैंडल्स हैं उसमें. इनफैक्ट उसमें वी टॉक्ड अबाउट इट. आप कुछ और लोगों को डीएम करिए, यू विल फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज. मार्केट ओवरली हॉट हो चुका है. रिटेल ने अब बोल दिया है कि माइक्रो कैप छोड़ो, हम तो प्री आईपीओ भी अभी हम ही करेंगे. कुछ दिन के बाद रिटेल ना, मुझे लग रहा है कि इनक्यूबेशन कैपिटल भी देने लगेगा. क्योंकि तो एक्चुअली दैट्स मेरा इंटरेस्ट है प्री आईपीओ में. मैंने रिसेंटली मतलब किसी वाया नून के थ्रू मैंने जैसे विक्रम सोलार में मैंने इन्वेस्ट किया था. दैट्स अ गुड कंपनी ना, मतलब अच्छी है, बड़ी बिग साइज कंपनी है. सो एटलीस्ट यू पिक्ड अ साइजेबल कंपनी जहां पे आपको एग्जिट रिस्क नहीं है, ये वाला रिस्क नहीं है कि कंपनी का आईपीओ ही नहीं आएगा, राइट? आई हैड एंड 2 more होपिंग opportunities but I दैट didn't like the company. मैंने सिर्फ एक फेयर इनफ. मैं इसको रिवर्स बोलूंगा. आई मीन दुनिया नहीं बंद हो जाएगी 6 महीने में, करेक्ट राइट? सो वाई फोमो, करेक्ट एक या दो जरूर कर लीजिए, एज्यूमिंग यू आर ए सीजन्ड इन्वेस्टर, वरना रिटेल को तो करने की भी जरूरत करेक्ट. नहीं है. जस्ट डू ए स्मॉल टिकट साइज, गो थ्रू द जर्नी, सी द एक्सपीरियंस. ये ऐसे ही चलेगा मार्केट. हर समय ऐसे लगता है कि हाँ ये लास्ट ईयर है, लास्ट 6 महीने है, उसके करेक्ट. बाद दुनिया एवरी ईयर बंद हो आई फील जाएगी, लाइक ये दिस इज मौका द है. एंड. मतलब बहुत मिस कर हाँ, दिया है. हाँ. बट वो 3 साल बाद आपको फिर से नई बारी, नई ओरियाना मिस की गिल्ट होंगे कि अरे शिट, ये क्यों नहीं मेरे पास आया. तो मतलब विथ एक्सपीरियंस विल रियलाइज दैट ये हमेशा ही ऐसे चलता ठीक है. है, मैं आपको तो डीएम इसमें कोई करता हूँ जल्दी श्योर नहीं. अभी. हाँ. नहीं नहीं अच्छा चलिए, हाँ, मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको तो करता करता हूँ, हूँ. फिर बाद में कनेक्ट बट करते आई, हैं किसी और से भी. ठीक ठीक है. है, ओके थैंक ओके, यू सो मच. Thank you, Sarvesh. So, Nikhil and Sandeep, we have taken almost all the questions which came to my notice. So, Nikhil and Sandeep would appreciate concluding remarks from you guys. We had a very interesting session so far, and definitely will explore more topics wherein you guys can share in your thoughts, and that would be helpful for our audience. So, Nikhil, any closing remarks? Yeah, thanks, Prince. First of all, I think a big kudos and thank to you to putting this together. I think what you're doing, uh, I had written to, I think I had tweeted about it also. I think I usually appreciate your efforts both by doing these Twitter spaces and also putting this content on YouTube for people to consume who might not be able to join our live spaces. I think it's very knowledgeable and very information
dense content, which helps a lot of people, not only in investing, but I'm sure in their lives, in their businesses. So I think that is very good. So a huge thank you to you. Also, a big thanks to Sandeep for joining us on this space because, like somebody also just put it, I love hearing Sandeep and some of his thoughts and comments. There's always in every time I speak to him or I hear him speak, I learn something new. So I really appreciate him joining and sharing his thoughts as well. And overall, I think I just feel I would say it's easy to have a short-term mindset, look at things कि आज है शायद कल नहीं होगी, get into that FOMO or what I call even ROMO, regret of missing out. But I think it is always about the infinite game where you think about, how I can be in the game. Or इसमें I would probably sign off by saying that, one of the best examples of that I feel is someone like Mahendra Singh Dhoni, a huge fan of his. I think he always said, basically he wanted to take the game टू द एंड. वो हमेशा लास्ट ओवर तक लेके जाते थे और फिर छक्का मारते थे. तो ऑब्वियसली कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट आई थिंक मोर ऑफन देन नॉट ही वाज एबल टू if he was able to take the game deep, he got the right result. So he always wanted to play the game to play, not just to win. So I think that's what probably has helped me in my journey. Thanks everybody for joining actually, because it was really nice to have so many people, hearing us, hearing our thoughts and asking some wonderful questions as well. So yeah, thanks Prince. Thanks once again. संदीप भाई, Thank you आई so much. वन सॉरी टू इंटरप्ट. मैं आपको डीएम नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आप यू हैव टू डीएम मी फर्स्ट. मैं कर देता हूँ आपको, बट ठीक है, आप कर दीजिए मुझे. मैं इफ यू आर ए विक्रम सोलार प्री आईपीओ इन्वेस्टर, यू नो मोर देन मी, बट एनीवे आई विल डीएम यू. थैंक यू. ठीक है, ओके. So thank you so much, Nikhil. Really loved the conversation, and it's always great to learn from the practitioners or those who have undergone that journey and sharing their aspects. And many of our audience can relate it, be it the businessman or the investors. So Sandeep, anything you want to say before we close? I mean, nothing. I mean, I always try to come to your spaces, Prince, because I consider it as joy of life. Casual talking, meeting new set of people, listening to them. क्योंकि वीकेंड्स में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का समय नहीं होता है, तो इसलिए ये जो आपका फॉर्मेट है प्रिंस, दिस इज ऑब्वियसली यू आर वेरी पॉपुलर इन small Indian financial world, but this as a format has become very popular across media, right? Even news media like London Top is way more popular than mainstream channels in India. Or even Chamat ki podcast या कोई भी globally podcast have become so popular because people want casual learning, not the preachy learning. एंड इन स्पेसेस में आके कई बार लगेगा कि अरे ये लोग 4 लोग मिलके गपशप ही तो कर रहे हैं, बट वो जो गपशप में है ना कि आप ड्राइव कर रहे हो, चाय भी बना ले रहे हो और साइड में है, तो आई एम पर्सनली बिग फैन. सो थैंक्स प्रिंस फॉर कंडक्टिंग ऑल दिस सेशंस. एंड निखिल भाई को मैं इनफैक्ट इन्हीं स्पेसेस में ही मिला था प्रिंस. आई नाउ डोंट रिकॉल कि कब मिला हूँ. एंड देन आई लुक्ड एट हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, आई वाज अमेज्ड, इतना एक्सपीरियंस बंदे हैं. एंड देन इट इज स्टिल ओके, but then I ended up talking, then I realized that he's an amazing human being also, and we started talking quite a bit of lot. So in spaces का वो भी benefit है, you bump into kind of people you will otherwise not meet. And markets life is more than the end outcome, it's also the journey. So thanks for that, and thanks Nikhil bhai for that. Great, and I can totally resonate with the fact that I've met so great people through this platform, and people have been kind. I would say this is just a virtuous circle. We are growing in network and learning, and definitely I can say with great conviction, we always try to live up to the expectations of our audience so as to keep the spaces clean and more on the education front. So those who are joining for the first time, definitely they can connect with us over our Twitter handles, and definitely